Mr. Abdul Ghaffar Bukti, you come here in Islamabad. Uh, you made a press conference, the central idea of the press conference in here in Islamabad. So, what is your demands regarding to your area? Thank you, sir, for invitation. Basically, we came here from Dera Bukti, far away from this capital, around about 1,000 kilometer. So we are around about 10 people from Dera Bukti to came here just for just realization to these gas companies and the Ministry of Petroleum for the committed agreements. So we are just to realize them that you did agreements like long time, not just one agreement. They made 8 to 10 agreement with us and our local leadership. So we just demand to those agreements should be should be materialized. So that's why we came here. You talking about the PPL company. So, your for the jobless persons, your demands, or for the circumstances of the Balochistan, you demanding. No, we were just talking about the agreement. Like before this, Haji were working there. So like after Haji's son should be there. So this was the commitment by the PPL as a son quota. Like in the OGDCL. Some quota, Supreme Court of Pakistan is finished. So, do you contact or do you submit any kind of petition in Supreme Court for this sun quota? No, but no, we still not any like put any station like any petition there. But we are thinking to put there. Basically, the Supreme Court judgment was not about the PPL or OGDCL or the local. Basically, we did agreement with the local. So this was our agreement. But yes, if PPL says this that they did the agreement with like they have the reference of this that petition or that Supreme Court judgment. So then we will proceed to the court. What is the disheartening cause of burning the degrees of this student, your colleague? Yes. What is the cause of burning Mainly mainly the unemployment, mainly the like the rich resource region, and people are mostly are deprived and the poor. So this person is also striving to like to feed their family, but he couldn't. So that's why he applied for many jobs, but he couldn't make it, and that's why he went to the Quetta Press Club and burned their degree. Chief Minister of the Balochistan, Sarfaraz Bukti, do you contact to them? Yeah, we contact, we met him many times, and we demand same thing, but still no response from the government से. हाजी लाल खान बाबा, अभी आपने कहा कि 1990 में आपने वहाँ पीपीएल जो कंपनी थी उसका मैनेजर भाग गया था, लेकिन आपने जो है उनकी आग में जो है ना बुझाने में आपने एक सरकर्दा किरदार अदा किया, और आप भी इस बेइंसाफ़ी का जो है शिकार हैं। हालांकि आप ये भी मान रहे हैं कि जो लिबास आपने पहना हुआ है वो भी मतलब जो अल्लाह के बाद उनकी बदौलत आपने उनका नमक खाया है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि और क्या मुतालबात हैं आपके? बस जैसे आपने सन 1990 का जो आग का हवाला दिया है उस पर हमें इतना दुख हुआ है कि जैसे ही हमने आग के शोले देखे, समझो आग वहाँ नहीं जल रहा था, आग हम लोगों के सीने में जल रहा था, क्योंकि हमारा रोज़ी जो था वो वहाँ से वाबस्ता था। रोज़ी देने वाला तो अल्लाह ताला है, लेकिन ज़रिया वो था। फिर हम लोग अंदर गए, हालांकि मैनेजर साहब ने कहा कि अब आप लोग सब यहाँ से भागो, अब ये प्लांट मुकम्मल तौर पे तबाह है। तो इसके बावजूद हमने कहा नहीं जी, हमारा दिल गवारा नहीं कर रहा है, ये हमारा रोज़ी का जगह है और इसके अलावा तो यहाँ कोई है भी नहीं। तमाम बुकटी या दूसरे लोकल ना लोकल जितने भी थे, सब ने अपना अपना हिसाब से कोशिश किया। उस लाइन पे अचानक जो है वो धमाका हुआ, आग तो पहले लगा हुआ था और हमारे 9 वर्कर जो है वहाँ शहीद हुए और 70 के करीब ज़ख्मी हुए। मैं खुद उस वहाँ ज़ख्मी हुआ, जैसे मैंने आपको अपना पीठ भी दिखाया, 6 महीना पूरा मैं उस हॉस्पिटल में ऊँधा, जिसको बिल्कुल जो है पीठ मेरा ऊपर, वो जो बच्चे के ऊपर जो हम लोग को पता नहीं बलोची में देमदार बोलते हैं, वो जो है वो हमारे ऊपर डॉक्टर ने रखा है। 6 महीना तक हम लोग हॉस्पिटल में रहे, हमने इलाज कराया, हमने अपना घर समझा, अपना मतलब अदारा समझा, अपना उसको फैक्ट्री समझा, हमने तो अपना फ़र्ज़ पूरा किया।
لیکن آج ہم ریٹائر ہو گئے. آج PPL ہمارے طرف سے بالکل توجہ نہیں ہے. امیر سرفراز وزیر اعلیٰ جو ہیں بلوچستان امیر سرفراز صاحب، وہ اس بارے میں کیا کریں؟ وزیر اعلیٰ صاحب تو یقین دہانی کرا رہا ہے. انہوں نے 2 ایگریمنٹ باقاعدہ سوئی کے مقام پہ انہوں نے جو ہے نا کمپنی سے ایگریمنٹ کیا ہے. PPL کا MD تھا، یہ وزیر تھے، پیٹرولیم سیکٹری تھا، بڑرا میاں خان تھا، سارے تھے. 14 فروری 2025 کو پھر آ کے ہمیں پریس کانفرنس کے ذریعے وزیر اعلیٰ صاحب کے یاد الفاظ ہے. اب وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہیں. جتنا بچا کچا ہے 5 سال 10 سال 8 سال سے ہے وہ سارا یک مشت بھرتی ہوں گے. یہ وزیر اعلیٰ صاحب کے اپنے الفاظ ہیں. لیکن 1.5 سال سے زیادہ ہوا ہے، وہ اس پہ ابھی وعدے پہ وفا نہیں ہوا اور مجبور ہو کے آپ لوگوں کے پاس آئے ہیں. ہماری آواز جو ہے صدر، وزیر اعظم تک اور DG ISI سب کے پاس پہنچا دیں جو بااختیار افسر ہیں، تاکہ ہمیں انصاف ملے اور ہمارے بچوں کو جو ہے روزگار ملے. ہم اپنے ویکینسی کی بات کر رہے ہیں جو ہم نے خود خالی کیا ہے، اب ان کی بات کر رہے ہیں. تھینک یو سر.